Regarding the great name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Today we will discuss chapter number 8, chemical reactivity. जैसे कि आप जानते हैं कि medicines, plastic, glass, detergents, all these are the products of chemical reactivity. Basically, what is chemical reactivity? Reactivity in chemistry means that that terms describe that how easily that substance undergoes a chemical reaction. किस जो है वो नौयत पे जो है एक एलिमेंट जो है आपका केमिकल रिएक्शन करता है with any material is basically that property of a substance कि वो किसी के साथ जो हो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको जो है हम रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी कहेंगे कि किस हद तक जो है वो रिएक्टिव है केमिकल रिएक्टिव है रिएक्टिविटी जो है वो एक आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एक मटेरियल जो है वो कितना रैपिडली जो है रिएक्ट कर रहा है और कितने केमिकल रिएक्टिविटी आप और आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किस रेट पर हो रहा है अगर तो आपका जो है वो केमिकल रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो आप कहोगे कि योर एलिमेंट्स आर वेरी मच रिएक्टिव ओके लाइक वो जो है वो जल्दी से ऑक्सीजन और एयर और वाटर के प्रेजेंस में जो है वो जल्दी से रिएक्ट करेंगे दैट मीन्स योर एलिमेंट्स आर वेरी मच रिएक्टिव ओके हमारे पास यहाँ पे तीन जो है वो चीज़ें शो की गई हैं नंबर 1 एलिमेंट शो किया गया है दैट वन इज़ योर सोडियम नंबर 2 इज़ योर मैग्नीशियम एंड नंबर 3 इज़ योर जिंक as a picture is as a shown in the pictures that sodium is very much reactive when you add sodium in the water it explodes on the second hand magnesium when you add magnesium it reacts vigorously and on the third you have zinc if you add zinc in water it reacts slowly sodium reacts vigorously with cold water but magnesium does not react with cold water why what is the reason here's a reason shown in the picture that sodium is very much more reactive than your magnesium बेसिकली जो आपका सोडियम है वो ज़्यादा जो है मैग्नीशियम से रिएक्टिव है आपको पता है कि मैटर जो है वो चेंजेस में अंडरगोज मैटर इट गोज अंडरगोज चेंजेस बेसिकली आपके केमिकल रिएक्टिव जो हैं वो सारे हो सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी हर चीज़ में हो सकती है दैट कैन बी इन योर एलिमेंट और इन योर कंपाउंड और इन योर मिक्सचर एलिमेंट आपको पता है कि सिमिलर एटम्स का मिलकर बना हुआ होता है और एलिमेंट्स को जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है आपके तीन चीज़ों के ऊपर तीन जो टर्म्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है नंबर 1 इज़ योर मेटल और नंबर 2 इज़ नॉन मेटल एंड नंबर 3 इज़ मेटलॉइड्स metals are what basically they are the elements that have ability to lose electrons easily and the number second property are they are lustrous that means उनमें चमक होती है reflective होते हैं and number 3 property of metals are they are malleable they can be molded into shapes आप किसी भी shape में उनको mold कर सकते हो किसी भी कोई भी shape आप बना सकते हो एक metal की and the metals are on the bottom in the bottom left in the periodic table bottom left का मतलब है कि आप तो एक तरफ जो है metals आ जाएंगे और left पे जो है और periodic table पे और right पे आपके जो हैं सारे non metals majority non metals की आ जाती है all B groups elements are metals and known as transition metals भी जो है वो use किया जाता है word for those elements which have partially filled d orbitals okay moving towards next slide this is about some metals related इनके पास कुछ थोड़े मुझे लगा कि ये MCQs बन सकते हैं तो I have mentioned these all barium is the strongest and highly toxic metal and number second is aluminium that is most abundant metal in the universe most usable iron है the most reactive metal जो cesium है lightest metal जो lithium है heaviest metal मेरे ख्याल से ये MCQs आ चुका है ऑस्मियम जो है वो आपका हैवीएस्ट मेटल होता है मोस्ट मैलेबल डक्टाइल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ मैलेबल एंड डक्टाइल्स गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ें बनाई जाती हैं मुझे लगा कि इनमें से MCQs आ सकते हैं तो मैंने जो है यहाँ पे एक स्लाइड ऐड की है इसकी ओके Moving towards your next topic, it is basically about alkali and alkaline earth metal.
What is difference between alkali and alkaline earth metal? That difference is shown in this picture. Basically, there are a lot of differences between alkali and alkaline metal. The basic difference are shown here. The term alkali is used for the group 1 elements of the periodic table. ग्रुप 1 के लिए जो है आपके लेफ्ट साइड पे ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो आपके हो जाते हैं लिथियम हाइड्रोजन के बाद लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंशियम दे ऑल आर known as alkali metal. And on the other hand, the term alkaline is used for to the name group to the elements of the periodic table. Second जो आपका group आ रहा है periodic table पर, they all known as alkaline earth metal. They are basically beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. They all are involved in alkaline earth metal. And alkali metals are soft. Basically वो क्या होते हैं, soft होते हैं as compared to alkaline. They are hard. Have alkali metals have 1 electrons as shown here. They form plus 1 cation. That means they have ability to lose 1 electron. And alkaline earth metal on the other hand, it has ability to form 2 plus cation. मतलब कि वो 2 electrons जो है वो lose कर सकता है. They have lower alkali metals have lower ionization energy, and alkaline earth metals have ionization energy, greater ionization energy. Okay, on the other hand, they have a lot of other properties. They form like alkali metals form carbides, and alkaline metals don't form carbides, and a lot of other properties, general comparisons of reactivities and other properties are discussed in the book. But हम मेरे ख्याल से इतना कंपैरिजन बहुत है. आप लोगों को याद होना चाहिए कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या फ़र्क है. ओके, डिटेल डिस्कशंस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो है वो हमारे पास डिस्क्राइब की जाती हैं मोस्टली, क्योंकि वो जो है इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फ्लेम टेस्ट. बेसिकली ये एक एमसीक्यूज मैंने देखा था कि ये मैंने पढ़ा था कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये आपका केमिस्ट्री की मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री में जो है वो आपके पास जो है ये प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवाया जाता है. डिफरेंट जो है मेटल्स को हीट जो है वो दी जाती है, वो कुछ कलर प्रोड्यूस करते हैं. तो फ्लेम टेस्ट जो है ना वो मेटल्स को जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, what is basically ionization energy? Ionization energy is nothing. It is basically energy that is needed to remove an electron from an atom. Like यहाँ पे शो किया गया है, हमारे पास एक एटम है, उसके इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने हैं, 4, 1 2 3 4. इफ आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जो है वो अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है, तो उसको हम कहेंगे कि उसने जो है उसके कैटायन फॉर्मेशन की उसके पास जो है वो एबिलिटी है. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट outermost shell is known as ionization energy. Ionization energies values decreases with increased atomic size and vice versa. जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी. और बेसिकली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो है वो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, एंड देयर reactivity is directly proportional to their size. Okay, in this slide in this slide basically position, properties and uses of some metals I mentioned. सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि आपका जो है वो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूजेस क्या हैं, बेसिक. ओके, सोडियम जो है हमारा 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और इट कंस्टिट्यूट 2.87% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, and basically it belongs to 1A group. And some common compounds of the soda ash, so of sodium is soda ash हो गया हमारे पास, baking soda हो गया, और टेबल सॉल्ट हम डेली यूज़ करते हैं, सोडियम नाइट्रेट दैट इज़ बेसिकली यूज इन द फर्टिलाइजर्स और इन डायनामाइट्स. ओके, one your next element is magnesium. It is the 8th most abundant element found in the earth, and it belongs to 2nd A group, and it's used in the flares and photographic flash bulbs में use होता है.
और मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स एंड टेबल कंप्यूटर्स वगैरह जो हम बनाते हैं उनमें जो है ये यूज़ होते हैं। और मैग्नीशियम एलॉयज़ जो है यूज़